Moon Limited issued 5,005% debentures of ₹100 each at a premium of 5%. Means face value given is 100 and you issued it for 105 because premium है. तो benefit हो गया 100 की चीज 105 में इशू की है. Redeemable at 110%. So redemption is at 100 की चीज 110 में. ये नहीं कि 100 plus 110. Redeemable at 110% means total 100 का 110%. That is 100 plus 10 110 में उसको redeem किया है. So this is a case of loss and that will occur after 3 years. Pass necessary journal entries. So you know that in future loss is going to occur. So उसका provision हमको आज से ही करके रखना पड़ेगा. Let's understand how this goes. First, पैसा बैंक में आने की एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application account. See, how many debentures are there? 5,000 debentures are there. And although the face value is 100, you are receiving 105 at the time of issue. So, बैंक में पैसा 105 के हिसाब से आएगा. 5,000 into 105, that comes up to 5,25,000. Being debenture application money received. That is 100 was for the face value, and since it is issued at a premium of 5%, so 100 का 5% 105. Okay, amount plus premium on issue. Now the second entry. सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री होगी. सब लमसम है इसलिए सारा अमाउंट एक साथ आ रहा है. एक बार छोड़ देते हैं जो भी रिडम्पशन का जो भी लॉस है. 100 रुपीज फेस वैल्यू था, 110 रुपीज पे रिडम्पशन है, सो इट इज लॉस. एक बार सिर्फ हम इशू का पार्ट देखते हैं, उसके बाद लॉस के लिए अकाउंट करेंगे रिडम्पशन के टाइम. यदि ये रिडम्पशन का लॉस नहीं होता तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती? Debenture application, you have credited it with 5,25,000. So debit that. Debenture application account debit. $5,25,000. Now 2. 5% debenture account. It's given in question 5% debentures. So 5% debentures दिया है तो 2 debentures ना लिखें, पूरा 5% debentures ही लिखेंगे. Okay, so 5% debentures account face value पे, that is 5,000 debentures into 100. 5,000 into 100. Okay, and 2 ये प्रीमियम है. So 2 securities premium reserve account, because प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू इज प्रॉफिट. तो डिस्काउंट होता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड प्रीमियम है प्रॉफिट है तो उस समय इशू के टाइम पे प्रीमियम
हमेशा प्रॉफिट होगा. सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हाउ मच 5000 शेयर्स है एंड प्रीमियम कितने का है आपने देखा 5 रुपीज, बिकॉज 100 का शेयर 5% प्रीमियम पे इश्यू हुआ है. सो 5 रुपीज. सो 5000 इंटू 5 25,000. ओके, दिस विल बी द एंट्री. बट अब एक चीज अकाउंट फॉर करना बाकी है, दैट इज you will face a loss at the time of redemption of this debenture. So account for that loss now in the current year only, even if you have to redeem it after 3 years. Okay, so अभी ही इस लॉस को हम बुक्स के अंदर लेकर आएंगे. So loss on issue of debenture, लॉस और एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट ही होते हैं. So loss on issue of debenture account debit. ये लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को एट प्रीमियम. सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. $5,000 डिबेंचर्स हैं. फेस वैल्यू इज 100 और उसको रिडीम करा 110 पे 10 रुपीज का प्रीमियम है. सो 5,000 इंटू 10 इज 50,000. सो हियर द अमाउंट वील राइट इज 50,000. Being 5,000 debentures allotted at a premium of 5%, और जो लॉस होने वाला है उसके लिए भी आपने सेम एंट्री में अकाउंट फॉर किया है. प्लीज रिमेंबर प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इश्यू इज गेन फॉर यू, क्योंकि 100 की चीज को आप सेल कर रहे हो यहाँ पर 105 में, बट प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज लॉस फॉर यू, बिकॉज जब आपको वापस वही चीज मार्केट में लेनी है, 100 रुपीज की चीज थी, मार्केट में से आपको खरीदनी है वापस, तो आपको कितना देना पड़ रहा है 100 की चीज का 110. सो प्रीमियम ऑन इश्यू इज प्रॉफिट और गेन, बट प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इज लॉस.